तो बच्चों देखो, हमें लिमिट निकालना है एक लॉगरिथमिक फंक्शन का। लेट्स सी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 log of 3x to the base 3 whole raised to log of 8 to the base x. That is limit x tends to 1, चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये हो जाएगा log of 3x अपॉन log of 3 एंड ऊपर हो जाएगा log 8 अपॉन log x. That is limit x tends to 1 log 3x को आप लिख सकते हो log 3 प्लस log x upon log 3 raised to log 8 upon log x. This implies limit x tends to 1 log 3 upon log 3 will become 1 plus log x upon log 3. पावर को भी एडजस्ट करो, 1 अपॉन log x है, log 3 से आप डिवाइड करो और तो दिस एंटायर पावर, ये देखिए log 8 आपने ले लिया बाहर क्योंकि यहाँ पे आपने log 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी आप log 3 से डिवाइड कीजिए। दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये आप समझिए कि as x tends to 1 log x upon log 3 जो है term that tends to 0 and you have a property that limit t tends to 0 1 plus t to the power 1 upon t को हम क्या लिखते हैं e. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा e raised to log 8 upon log 3, or you can rewrite this as using change of base property log of e raised to log of 8 to the base 3. That means आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।